esports influence, Zoe continuously develops tailored products, empowering gamers to bring their best out. Today, we are launching the all-new XL2566X Plus, which uses the newly developed Fast TN panel and upgraded Diac 2 technology. The new monitor series continue to evolve, refining details to ensure players can perform their best consistently in games. We built them to master the climate. They told us this was to stabilize the environment. I thought we were helping people, but it was a lie. It was a device for their entertainment. Their grand plan was to push the battle to the breaking point, to make the battlegrounds a brutal, unadulterated slaughter for their entertainment. But something went wrong, and the satellites are going to start shattering over Irango. I don't know how long we'll have, but the weather will turn feral, beyond control. Irango won't be the same again. Someone has to stop it before it's too late. If anyone is listening, save Irango.
are you not entertained? Because, man, we have had some crazy games to start with. I mean, pans. Only having a pan as a weapon happened inside the last game. Firefights, coastlines, crazy circles, loving it. I mean, this has just been a great start to the day. Miramar delivers once again, and you get all kinds of fun stuff. You get bolts from the expendables. You get, just the absolute madness of that circle. Furia coming through with a really nice win there in a position that, yes, is strong. Yes, is center circle for most of that game, but they reached out and got a bunch of kills. They started to get proactive when they needed to, doing all the right things. When you're gifted those games, that's where you got to make your points. Yeah, and it was just a really, weird insert, too, because we didn't have a chance to dive into it because of how some action was. We had those compounds, and then immediately to the south of them, there was the hillside raise that was pretty steep that led into that slow, sloping hillside that's got all those trenches in it. That's how Shen managed to survive for so long. But it also meant that there just wasn't a lot of clean angles to play from. And so it was like a little king of the mountain kind of firefight where everybody was just kind of trying to keep control over that and then keep control over the whole circle. Yeah, it's a tough spot to be in if you're not up on that high ground as that game progresses, because there actually is quite a bit of angles that teams can take into you, so it becomes really hard to sled up there, as you saw with Sharper, you saw with the Freaks. Yeah. And again, little mistakes will cost you in a game like that, and that's something that Furia did not really make until the very end, when maybe they gave Orchid a little bit of hope, but overall they were still able to lock it down with that extra man advantage. I've seen it like literally almost every team represented in these signs. It's so awesome. Yeah. I mean, there's 4 a.m. fans. I mean, obviously there's Sharper fans. 17 fans. Just everybody's represented, dude. I mean, I've seen fans for FaZe, Navi. It's crazy. I saw a FaZe flag. Somebody had a full FaZe flag. Not I'm just going to draw something, but it had one they had purchased that was holding it up and waving it, whatnot. Oh, Batu. Thank you again, Batu. I know, Batu wasn't happy about being in that situation, but I don't know how he keeps fighting him. These I have no loot and I just have to kind of chill situations, but thank you. He's just he just is such a smart player. That's the only way you can get yourself into those spots. And entertaining. He is entertaining as hell. I mean, just what a moment there. The funniest part of it was Roth's reaction. Him just throwing up his hands like, you've got to be kidding. Bumped into him at the break. Roth was like, what? What was even happening there? I also, big shout out to Roth during the walkouts. I love the fact that he actually went full Super Saiyan yell to try to get the crowd hype. Another great entertainer and player at the same time. Oh, he is one of those players who wears his emotions on his sleeve, Loudly. And I loudly. And proudly. I relate. I do too. I mean, the best part about Roth is you go, you catch him outside the hotel or whatever, and he will chat with you for days. And he is just so interesting and so well thought out, and just why he's been such a great player is he takes this stuff so seriously, and he will talk to you about it anytime you want. A couple of Sharper signs out there, and respect. I mean, Earth Bluey, Esclusa just popping off, man. Sharper has been on a rise, and I respect it. They're playing a disadvantaged position in that last game, and still just trying to cling to life, find ways, trying to find some advantages for themselves, and just consistent on this leaderboard. Yeah, again, it's confidence for them. They picked it up on day one, and they're continuing it here on day 2 of this group. They're really just not afraid to do what they need to do to get in, into the late stages of the game, to take a fight when they absolutely have to. So that's really so impressive for that Thai squad, who just barely squeaked into this event, and they're making the most of it. The Freaks need to right themselves. I mean, they should be fine. Again, Miramar's always been a struggle for them. I think you could take today as a win for the Freaks in terms of improvement on that map, because you got deeper into the games. Well made. Look at that. Yeah, those are some sick signs, dude. And they're salute DL FN fans. So, not sure if they're from Korea or not, but regardless, those are very, very well-made fan signs. The extreme close-up. Extreme. He's the coach for Liquid, sorry. I was about to make another joke and you just broke my brain. Victory is yours. Thank you. Yes. I will take this one victory in middle time, though, right? Yeah. Genji, please do something. JDG, this is something. Find something here. These are the maps where you need to find something, because once we move into this next game and we finish it, that's the halfway point for the group stage. Yeah, exactly. And you know what's bonkers is if
a team, let's say, like T1, does really nicely here on these next two maps, like, and then they still are getting hot dropped, like, the rest of the time, like, they're going to be in contention for a top 5 spot while being hot dropped on 2/3 of the maps. Just feeding the opportunities for a Porsche MVP off. Just go ahead. Let's just keep these hot drops going. I love it. Let's get more kills. Yeah, Type is licking his lips, yeah. He would like a Porsche. He would. Who wouldn't? It's interesting because, like, all the teams have already kind of talked about this, by the way. Like, okay, if we get it, because there is the option to, like, trade it for cash value. Most of the teams have actually said, we're actually not going to take it. We're just going to split it because we feel the MVP is a team award anyway. Yeah. And we'll just kind of split the value amongst ourselves. And that kind of goes into the way a lot of these, like, teams are looking at how everything has been set up. Yeah, no, it is like... It's so funny because this has been generally what happens in PUBG esports is that the MVP just takes that money and then evenly divides it amongst the rest of the team. I've heard that since day one. Well, it is so hard to get everything set up, and sometimes it's kind of hard to get everything set up over here, so we're going to do a quick kind of break to get everything set up with this technical situation. We'll be back in just a few moments. Fueled by the same passion as esports athletes, Zowie continuously develops tailored products, empowering gamers to bring their best out. Today, we are launching the all-new XL2566X Plus, which uses the newly developed Fast TN panel and upgraded DIAC-2 technology. The new monitor series continue to evolve, refining details to ensure players can perform their best consistently in games. This was never our purpose. You need to know the truth. These satellites, we built them to master the climate. They told us this was to stabilize the environment. I thought we were helping people, but it was a lie. It was a device for their entertainment. Their grand plan was to push the battle to the breaking point, to make the battlegrounds a brutal, unadulterated slaughter for their entertainment. But something went wrong, and the satellites are going to start shattering over Irango. I don't know how long we'll have, but the weather will turn feral, beyond control. Irango won't be the same again. Someone has to stop it before it's too late. If anyone is listening, save Irango. Oh, snowy Erringale. I'm so excited. I am actually really excited for that. It's nice to have a snowy map that isn't Vikendi, too. I love how we have to have this big, huge lore reason for why Erringale, which is supposedly in Russia, has...
गेमिंग को दाद देना पड़ेगी। जिस तरह से उन्होंने जीएस से फाइट लेने की बजाय हिल की तरफ आकर प्रेफर किया कि वो स्लैमिन देकर उस हिल को क्लाइम करें किसी तरह से, जीएस उस सिचुएशन में स्पेस कर रही थी। हुए थे, लेकिन अभी के लिए अभी भी मिलिट्री आइलैंड पर नहीं गए। मुझे ऐसे लगा थोड़ी देर के लिए कि What is this bitch? Nishan Nadi, IQ is a farmer. He does farming. अगर आप पूछें कौन सी फार्मिंग, तो I have to say this, और farming, yes, because ये जो रोटेशन है, और अब आप देखें जाकर स्ट्रेट सर्कल में स्लैमिन नहीं दिया। Let me show you. पर उससे पहले यहाँ पर एक फाइट बन जाती है फाल्कन्स वर्सेस वुल्व्स की, जहाँ फाइट बनती भी दिखाई देगी। फाल्कन के प्लेयर्स आउट इन दी ओपन आएंगे, हिकॉर्ड्स को एलिमिनेट करना है, एक बड़ा चैलेंज तो है, लेकिन रिस्क लेते हुए दिखाई दी और उनको एलिमिनेशन पॉइंट मिल जाता है। कहीं आगे नहीं जाना चाहता, आ रहे हैं, इधर ही आ रहे हैं, वो इधर ही आ रहे हैं, हमारे दूसरे कैंप की तरफ ही आ रहे हैं। आगे नहीं जाना चाहता, आगे नहीं जाना चाहता, क्योंकि पीछे बिल्कुल टीम जेंजी है। अगर और वुल्व्स ने जो गलती की, वुल्व्स ने अलादीन वही गलती आईसी को नहीं करनी, बिल्कुल सेंटर में जाने की। आउटस्कर्ट्स में रहे मिलिट्री बेस के, हॉटस्पॉट एरिया पर आपको डायरेक्ट स्लैमिन कभी भी देना नहीं चाहिए। एंड आई थिंक सो आईक्यू इज सेंसिबल इनफ कि वो गलती जो वुल्व्स ने की है वो नहीं करेंगे। बट खैर, वहीं पर नोवो साइड के ऊपर जो एक केओस बर्पा हो रहा है, उसमें से निकलकर टीम डी प्लस की, ओ माय गुडनेस, ये अच्छा था। एयरबॉर्न पॉइंट्स कुछ मिलने चाहिए, -2, लेकिन अभी फिलहाल के लिए टीम डी प्लस के आपको सर्कल के अंदर आती दिखाई दी है। ऑल्टरी गुआरिस इस बार वो गलती नहीं करेंगे ग्लाइडर लेने की, पिछली बार जो हो चुकी सो हो चुकी। ऑल्टरी गुआरिस थोड़ा संभल कर खेलना चाहती है अब जाकर। एंड पापारा सुपर मैसिव वो भी जो तैर कर आए थे, अब बहुत लेट हो चुके हैं ब्लू जोन। इनफैक्ट रोटेशन पिछले मैच की उनकी बेहतर थी पापारा सुपर मैसिव की, इस मैच के अंदर फिर वो फंस चुके हैं मेन आइलैंड के ऊपर। एंड लूप्स वर्सेस ओरांगुटान आपको मेन आइलैंड पर ही होता दिखाई दे रहा है। ओरांगुटान्स अनफॉर्चुनेटली सारे के सारे प्लेयर्स ब्लू का डैमेज ले रहे हैं, सारे के सारे प्लेयर्स आपको यहीं पर ही मौजूद दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब एक आखिरी चारा बच चुका है, लूप्स को एलिमिनेट कर कर इस मैच में कुछ 4 पॉइंट्स उठाएं और चंद एक पॉइंट्स और अगर मिल गए तो मिल गए, वरना लूप्स को ही एलिमिनेट कर कर ओरांगुटान्स को इस मैच से बाहर होना पड़ेगा। जी हाँ, तंकी को फिर से नॉक किया जाएगा। ऑलवेज द फर्स्ट वन जिनकी तरफ नॉकआउट निकलता हुआ दिखाई देता है। इनका आतंक जो है वो खत्म हो चुका है, कई बार खत्म हुआ है और बार बार खत्म हुआ है, लेकिन ओजी के ऊपर एक वल्नरेबिलिटी बन रहे हैं ये इस वक्त। हर फाइट के अंदर ये आगे जाते हैं, नॉकआउट होते हैं और ओजी फॉल बैक कर जाती है। देखिए यहाँ पर जो एक डिसीजन मेकिंग है और क्लियर डिसीजन मेकिंग है, वो ओजी की तरफ से नहीं देखने को मिल रही। इफ यू वांट टू फाइट देन गो ऑल इन, इफ यू डोंट वांट टू फाइट जस्ट गो बैक। अगर एक पर नॉक होने के बाद आप वापस जाना चाहते हैं या आप वापस जाएंगे, तो फिर उस फाइट में आपको आना नहीं चाहिए। बट नेवर माइंड, दे विल लर्न इट। जैसे वो आए हैं इस ग्लोबल चैंपियनशिप के अंदर, जब इससे जाएंगे तो एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा लेकर जाएंगे। जी आती जी मैं ये कह रहा था कि जी बिल्कुल आपने सही कहा, या तो विन है या तो लर्न है। और अभी फिलहाल के लिए आपको सर्कल से बाहर आप देखें कि नहीं, या तो विन है या तो लर्न है ऑब्वियसली। ऑल्टर ईगो, सुपर मैसिव, 9G ग्लूबेंट, लूप्स और टीम सीक्रेट ओजी, ये सारे आपको सर्कल से बाहर दिखाई दे रहे हैं। एंड अब सारे मिलिट्री ब्रिज से एंट्री हासिल कर रहे हैं मिलिट्री आइलैंड पर। यही काम आईक्यू आपको अरसा पहले करते दिखाई दिए थे। आप यहाँ से अंदाजा लगा लीजिए कि कितने सेंसिबल आईजीएल हैं आईक्यू, माशाल्लाह। लेकिन अभी फिलहाल के लिए कोई भी रुकावट लूप्स को तो नहीं मिलेगी रोटेट करते हुए, लेकिन आईसी उनके पास एक मौका है एलिमिनेशन पॉइंट्स उठाने का। और ओरांगुटान्स बिल्कुल करीब टीम आईसी के अब आ चुके हैं। मेन आइलैंड से मिलिट्री आइलैंड के ऊपर रोटेट किया है उन्होंने अपने 3 खिलाड़ियों के साथ। एंड पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, अभी तक के लिए हमें एक प्रॉपर फाइट नहीं बनती दिखाई दी है। इस पीएमजीसी का क्लाइमैक्स होगा ये फाइट, सभी लोग देखना चाहते हैं ये फाइट। और ये फाइट क्या ये मैच लेकर आएगा जाने से पहले, पीएमजीसी ग्रुप ग्रीन खत्म होने से पहले, मैं देखना चाहता हूँ। एंड ओरांगुटान्स आईसी के करीब आए। आई थिंक सो ओरांगुटान्स को पता लग चुका था कि वहाँ पर एक टीम मौजूद है। अब वो वहाँ से एक डिफरेंट एंगल से रोटेट कर मतलब अबैंडन कर उस फाइट को आगे बढ़कर कहीं और से सर्कल के अंदर जगह बनाएंगे। अभी भी हैं वो मिलिट्री आइलैंड पर, लेकिन ब्लू जोन में।
जी हाँ, सर्किल अपना अगला शिफ्ट लेकर जाने वाला है आदि। सर्किल के हिसाब से आईसी की पोजीशन अच्छी तो है, लेकिन सर्किल जाएगा कहाँ पे? एक नॉर्दर्न शिफ्ट आता है, रिग्रेट जरूर होगा टीम आईसी को कि सी बिल्डिंग में क्यों नहीं जाया गया, लेकिन इस बार वो जाना चाहते हैं। गॉड सामने मौजूद है, ध्यान से जाना है। आपकी वेस्टर्न साइड पूरी तरह से क्लियर तो है, लेकिन वहां पर एक टीम थोड़ा सा आगे जाए, बाहर एक्सटेंड करें सी बिल्डिंग की तरफ, तो वहां पर एक टीम मौजूद रहेगी। ये सर्कल कहाँ खत्म होगा आदि? जहां आरसी मौजूद है शायद वहां खत्म होगा, लेकिन इसके सामने ऑल्ट ईगो की फायर चलती हुई दिखाई देती है। रोटेशन के टाइम पे अल्फा थोड़े बहुत स्पेस करते हुए दिखाई देंगे, बट ऑल्ट ईगो के ऊपर 2 नॉकआउट्स हैं और वंस अगेन टेबल टॉपर्स आर फाइटिंग विद ईच अदर। ऑल्ट ईगो वर्सेस डी प्लस किया हो रहा है आदि, बट किल फीड में आरू गिर जाते हैं। रेडॉक्स ने यहाँ पर आरू को फिनिश किया। कॉलकोट इसी के साथ साथ पुश करते हुए दिखाई देंगे। हॉस्पिटल की तरफ पुश कर दिया जाता है। नॉट अ गुड स्पॉट, नॉट अ गुड पोजीशन, नॉट अ गुड वे टू पुश लाइक दिस। सही जगह पुश किया। इज द लास्ट वन स्टैंडिंग। आई डोंट थिंक सो, जरूरत नहीं थी, यहाँ आना नहीं चाहिए था। 2 टीमें यहाँ मौजूद थी। आप समझे नहीं। भरोसा हॉस्पिटल बिल्कुल। हाँ जी, ओके वाह, आप ये कर लीजिए, मैं जा रहा हूँ। ओके बाय। सॉरी मैं मजाक कर रहा हूं। लेकिन खैर आप ये देखें कि जो भी जगह पर आया है, पहले वुल्व्स ने यही गलती की, अब वही गलती टीम ओजी करती है। 9G ग्लोबेंट भी उसी सारे क्लस्टर के अंदर फंस चुके हैं, एंड लूप्स कहाँ पर एलिमिनेट हो रही है ये देखना जरूरी है। शायद ऑल्टर ईगो, अल्फा गेमिंग, अच्छा उनकी एक फाइट बिल्कुल ही डिफरेंट एंगल पर बन रही है, बिल्कुल ही डिफरेंट जगह पर बन रही है, बट यहाँ पर एक प्लेयर को मारने की अब कोशिश कामयाबी में तब्दील हो जाएगी। टीम रिजेक्ट अपने लिए कुछ एलिमिनेशन पॉइंट्स उठाती है और एक व्हीकल शोरूम आपको यहाँ पर बनता दिखाई दे रहा है। वहीं पर फाल्कन्स और 9G ग्लोबेंट आपस में भिड़ेंगे। 9G ग्लोबेंट के प्लेयर्स एक और बुरा मैच। आज के दिन का आगाज बड़े एक हायर नोट के ऊपर किया गया था 9G की तरफ से। जी हाँ बिल्कुल, 9G ने काफी अच्छा आगाज जरूर किया था इस मैच का, आज के दिन का इनफैक्ट, लेकिन अभी के लिए फिर लॉबी की तरफ जाते हुए दिखाई देगी टीम आरसी ऑन द साइड। आरसी को क्या हो रहा है आदि? वो एलिमिनेशन पॉइंट्स इस तरह से निकाल रहे हैं, एक एक करके सबको ही चेरी पिक किया जाएगा। एपीजी वहीं पर अगर उनको देखा जाए, सर्कल के बाहर ऑल्ट्रिको को गेट कीप किया जा रहा है। देयर इज नो वे कि क्रिप्टन यहां से सर्कल में आ पाएंगे। ही डज नॉट हैव एनी हील्स। कुछ बैंडेजेस तो मौजूद हैं, कुछ किट्स भी हैं, लेकिन ये काफी नहीं है। अल्फा गेमिंग वो नहीं जाते अबैंडन करके एक एलिमिनेशन पॉइंट, वो यहीं बैठे हैं। एटलीस्ट एक विकेट तो छोड़ा जाएगा, डॉग फॉल बैक करेंगे, बट स्टिल अगर आप लेफ्ट साइड पर देखें, हिल टॉप के ऊपर 2 प्लेयर्स मौजूद हैं। ब्लू का डैमेज अल्फा भी नहीं खाना चाहती, लेकिन ये एलिमिनेशन पॉइंट्स वो छोड़ेंगे भी नहीं। और साथ ही साथ आधी एलिमिनेशन पॉइंट इकट्ठा करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बैक स्टैब क्लियर रखना। ये प्लेयर बैक स्टैब देगा, नॉकआउट फिनिश कर सकता है, बट क्रिप्टोन क्या वो जाएंगे आगे? क्या उनकी पोजीशन को स्पॉट किया जाएगा? क्या एलिमिनेशन पॉइंट निकाल लिया जाएगा? अभी तक के लिए काफी सारे सवालात तो हैं, लेकिन जवाब मिलने में भी ज्यादा टाइम नहीं आती, बिकॉज क्रिप्टोन कुछ सेकंड्स में ही उनकी जो किट्स हैं वो खत्म हो जाएंगी और उसके बाद उनको आगे आना पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी उनके आगे आना। बट क्या अल्फा गेमिंग इतना इंतजार कर सकती है? रीफर्स को सर्कल में भेज दिया गया है, बाकी तीनों प्लेयर्स वेट कर रहे हैं। इधर साइड लूज वर्सेस एसयूपी, ये भी फाइट बनती हुई दिखाई देती है। सर्कल में अच्छी जगह हासिल करने के लिए ही टीमें लड़ती हुई नजर आएंगी। इनफैक्ट सर्कल में जगह हासिल करने के लिए दोनों टीमें आपस में मुठभेड़ का शिकार होंगी। एसयूपी को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। लूप्स के पास 9 एलिमिनेशन पॉइंट्स आ जाएगा आदि। ये क्या कर रहे हैं लूप्स के प्लेयर्स? देर आए दुरुस्त आए, ये टीम 83 भी आने वाले हैं। हैं। 90 पॉइंट्स के करीब टीम लूप्स भी अपने आप को लेकर आ रही है। भाई चल क्या रहा है? 10 टीमें, 11 टीमें, चले 11 नहीं 9 टीमें अगर लूप्स इस मैच लेती है तो आपको तकरीबन आने वाले 3 मैचेस के अंदर ये 9 आपको तीसरे स्पॉट के लिए लड़ते दिखाई देंगे। लेकिन वहीं पर सर्कल फिर से चंद 1 मीटर आगे चला जाता है टीम आईसी से, लेकिन अभी फिलहाल के लिए वो सी बिल्डिंग का एज एक स्लाइड